Hello, good morning students and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of the topic probability distribution. In last video lecture we completed up to 33 MCQs of same worksheet of the topic probability distribution. If you want to download this PDF of this worksheet of 50 MCQs, which is very important and most selected MCQs of various books of MST-CET. So kindly see the description of this video and touch the blue link of PDF of differential equation. You will get the PDF. Okay, so let's see the MCQ number 34 because up to 33 completed. Now we have to start 34. MCQ number 34. Read the question 34. K is any real number. K is greater than 0. Probability of x is equal to x. K 4x. X from 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. So it is actually 4cx होता है वो. K into 4cx. Combination का presentation है. This and this are absolutely same. We have to find the K. So सिर्फ x की जगह पर 0 रखो. Probability x is equal to 0. Probability x is equal to 1. Probability x is equal to 2. Probability x is equal to 3. Probability x is equal to 4. इतना सिस्टमेटिक भी लिखना जरूरी नहीं है. Target is what? Answer is the target. Don't mention everything in the solution, in the calculation. Okay, because our target is correct option, not the systematic writing. So K into, but here is explanation, here is the dictation. That's why I write everything in the details. K into 4C0, K into 4C1, K into 4C2, K into 4C3, K into 4C4. This 0 it means 1. This same it means 1. This is a property of combination. This is 1, that's why 4. 4C2, K into 4 into 3, 1 into 2. So this is K, this is 4K, this is also K. 4C3 and 4C1 are same because NCR and NCN minus R is same. So K into 4, this is 4K. 2 2s are 4. 3 into 2, 6K. Now we have to find the value of K. Sum of all probability is equal to 1. 6 plus 4, 10 plus 1, 11 plus 4, 15 plus 1, 16. 16K is equal to 1 means obviously 1K is equal to 1 by 16. 10, 14, 15, 16. So answer of 34 is 1 by 16. B is the correct answer. B is the correct option. Okay. So in the calculation you didn't mention the any descriptions. पूरा लिखने जरूरी नहीं है. Details लिखना जरूरी नहीं. ये सब लिखना जरूरी. Direct 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 निकालना है. K तो as it is है अब वहाँ पर, right? But यहाँ पर मैंने explain करने के लिए हर चीज़ डिटेल में लिखी है. Okay. So now 35 and 34 is very similar. Look at the MCQ number 35. 5cx divided by 2 raised to 5. So 2 raised to 5 तो फिक्स है. So हमें सिर्फ लिखना है 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5, 5c1 is 5, 5c2, 5 into 4, 1 into 2, it is 10. 5c3 and 5c2 same because 5c3 means 5 minus 3 is 2, which is also 10. 5c4 and 5c1 same because 5 minus 4 is 1, it is 5. 5c5 and 5c0 same, it is 1. 1 to 5 है, not 0. 0 भी है, sorry, x is equal to 0 भी है यहाँ पर. So 5c0, it is 1. So these are the probabilities divided by 2 raised to 5, divided by 2 raised to 5, divided by 2 raised to 5, 2 raised to 5, 2 raised to 5, 2 raised to 5. Right? What we have to find? A
which is probability x is less than or equal to 2, less than or equal to 2 इतनी एडिशन, 2 से लेस वो 0 1 2 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 यहाँ से आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या है 3 4 5, सो 5 1, दिस इज अ 1 5 10 1 5 10, दोनों का आंसर सेम आएगा 16 बाय 2 रेस टू 5, दिस आल्सो 16 बाय 2 रेस टू 5, दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी इज व्हाट प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, so it means A is equal to what B. I hope you understand the MCQ numbers, the solution of MCQ number 35. Okay, so A B which is mentioned probability x is less than or equal to 2, less than or equal to 2, 0 1 2 1 5 10 16 by 2 raised to 5, एडिशन करना है, उसकी सम लेना है. So okay, so we'll start now 36. Now look at the MCQ number 36. So if a discrete random variable x has the probability mass function, we have to find variance of x. So first we have to find the k. So probability is what, k into x square. X takes the values 1 2 3 4. Okay, so पहले x लिखेंगे, this is x 1 2 3 4. What is probability of x? k रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16. सो यहाँ पर अगर k रखा k तो इसका सम लेना पड़ेगा 25 30. सो 30k इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय 30. सो k की वैल्यू 1 बाय 30 है, सो 1 अपॉन 30, 4 by 30, 9 by 30 and 16 by 30. That is the probability. Because k is unknown. k कैसे फाइंड किया मैंने? सबके एडिशन, k 4k 9k 16k, 16 plus 9 25 plus 5 30. So k is equal to 1 by 30. Now we have to find px into px. 1 by 30, 8 by 30, 27 by 30, 64 by 30. Now x square into px, x square into px, x का square multiplied by, it is 1 by 30, 2 square is 4, 4 4 are 16 by 30, 9 into 9 81 by 30, 16 16 256 by 30. इसकी सम पहले फाइंड करेंगे 30. शायद ही मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है. k इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर नहीं हुआ ना? ओके, नहीं हुआ शायद. ओके, डजंट मीन, विल सॉल्व नाउ. 64, 8 plus 1 9 9, this is a 36 and 100 by 30. इसकी सम लेना पड़ेगा 30, 9 plus 16 25 यहाँ पर ऐड करेंगे. अगर 25 ऐड किया तो ये 6 plus 1 11, यहाँ पर 5 plus 3 8, 281. Right, now what is the variance of x? Expected value of x square minus expected value of x whole square. So it's a 281 by 30 minus 100 by 30 square, 100 by 30 square. So इसका कैलकुलेशन करो, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है. 900. देखो यार, उसको 30 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेशन v ऑफ x का.
आंसर ऑफ 36 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आई थिंक ये आंसर आना चाहिए। देखो कैलकुलेट करो, दिस इज 36, नाउ 37। फाइनल कैलकुलेशन बाकी अप टू यहाँ तो करेक्ट है, यहाँ तक तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, बस इसके बाद आपको सॉल्व करने पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम 900 है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8। Okay, now 37. Probability of x is equal to x, k into x. X takes the value 0, 1, 2, 3. So k into 0, probability x is equal to 0, x 0, 1, 2, 3. Their corresponding probability k into 0, k into 1, 2 into k, 3 into k. Okay, first of all, what is k? K is 3 plus 2 5 plus 1 6, 6 plus 1 7. So k is equal to 1 by 7. K is equal to 1 by 7, 2 by 7 and 3 by 7. What we have to find here? Probability x is less than or equal to 2. So less than or equal to 2 इतना है, 3 by 7 is the answer. एडिशन करना है। ओ यहाँ पर तो आंसर नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 इतना है, 2 plus 1 3 डिवाइड बाय 7 कैसे आया? सम ऑफ ऑल इज 1, 3 plus 2 5 plus 1 6 है, 6 अपॉन 6। So 3 by 6, 1 by 2 is the answer. So ये is the correct answer. Okay. So 37 का आंसर कितना है? 1 by 2, ये ऑप्शन. Okay. So kindly solve the 36, you will get the answer. यहाँ पे 9 into 9 81 है, it's not 81 by 30. So इसके एडिशन 354, ये 354, ये 354। सो इसका अगर एलसीएम से मेथड से स्टार्ट किया तो इसको 620 डिवाइडेड बाय 900 आंसर आता है। सो दिस इज व्हाट 31 by 45। इसको अगर सॉल्व किया तो 0.69 ये आंसर आता है, डी ऑप्शन। सो 36 का डी ऑप्शन, दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ 36। 37 भी हुआ है, अब 38 लेंगे। Now example number 38. So table is given, discrete random variable has probability distribution. We have to find probability is odd. X is odd and probability X is even. Odd means 1 3 की sum, 1 and 3 की sum 0.6 आता है आंसर इसका, 0.6। और even means probability at x is equal to 2, probability at x is equal to 4, 2 और 4 की sum 0.2 0.2 0.4। सो ये दो आंसर है, ये फर्स्ट आंसर मीन्स ये क्या आंसर है? ऑड और इवन फाइंड करना था, 0.6 एंड 0.4, 0.6 एंड 0.4 इज सी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 38। नाउ 39, सी द 39 हियर। I will start from here, 39. So probability of x, this is probability mass function x upon n into n plus 1.
सो n तो दिया है, x takes the values 1, 2, 3 up to n. Their corresponding probability 1 upon n into n plus 1, 2 upon n into n plus 1, 3 upon n into n plus 1 and n upon n into n plus 1. X into px, that is expected value, 1 upon n into n plus 1, 4 upon n into n plus 1, 9 upon 3 into 3, 9, 9 upon n into n plus 1 and n square divided by n into n plus 1. So 2 into 2, 2 square, 3 into 3, 3 square, 4 into 4, 4 square, n into n, n square. We have to find expected value. Expected value is nothing but sum of x into px. सम ऑफ x इंटू पी, इसकी सम लेना है, दोनों का सबका डिनोमिनेटर सेम है n इंटू n प्लस 1. न्यूमरेटर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. और सम ऑफ फर्स्ट ईयर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 बाय 6. ऑलरेडी अपॉन ये है n इंटू n प्लस 1. So this term cancel. After separate dividing, n by 3 plus 1 by 6, 2n by 6, n by 3, 1 by 6. So n by 3 plus 1 by 6, n by 3 plus 1 by 6. So B option. Got it? So we have to find expected value of x, sum of x into px. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर n square. 4 is a 2 square, 9 is a 3 square. So taking denominator common, which is n into n plus 1, sum of numerator 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up to n square. And we know that this is a sum of square of first n natural number, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Okay, that is a special type of series. So this is the completion of 39. We will take 40. Now we'll take 40. Probability mass function of discrete random variable x is p of x, c upon x cube. P of x, c upon x cube. X takes the values 1, 2, 3. So c upon 1 plus c upon 8 plus c upon 27 is equal to 1. Sum of all probability, पहले x की जगह पर 1, बाद में 2, बाद में 3. Sum of all probability, that is equal to what? 1. So this is now example कितना है? 40 है. Now इसका 27 8 जा 216, 216c plus 27c plus 8c is equal to 1. So इसका एडिशन तो ये 35 और ये 251, 251c is equal to 216, c is equal to 216 by 251. So this is the value of c. Now we have to find the table. So this is the table. First x, second px and third x into px. We have to, हमें expected value of x find करना है. ये px. X takes the values 1, 2 and 3. Their corresponding probability. पहले C 216 divided by 251. ये C की वैल्यू upon x cube is 1. 216 divided by 251 into 2 cube is 8. 216 divided by 251 into 27. So this is same, but this is 27 upon 251 and this is 8 upon 251. 27 8 जा 8 27 जा. Right, now x into px. 216 divided by 251, 27 by 251
and 8 upon 251. So which one is this? 251. अभी एडिशन करना है. 35 plus 256. This is I think 35 plus 1 x into px, x into 27 2s are 54, 8 3s are 24. इसकी सम फाइंड करना है. ये 251, न्यूमरेटर 216 प्लस 54 प्लस 24, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 14 6 14, 5 plus 2 7 plus 2 5 plus 2 7 plus 1 9 9 plus 1 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 1 9, 294 by 251. So this is the answer. B is the correct option. ये जो सब पार्ट है ना कैलकुलेशन के, इस पे आप फुल फोकस करके सॉल्व करो. सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर. सो दिस इज द 40. नाउ विल सॉल्व द 41. Now 41. ये एग्जाम्पल यहाँ पर बाय मिस्टेक ये 41 यहाँ पर आएगी बिकॉज ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है. सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज स्किप फॉर द 2021 MSTCET ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन. सो 21 स्किप करो बिकॉज दैट एग्जाम्पल बिलोंग्स टू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो 42 करेंगे हम यहाँ पर. एक एग्जाम्पल बाय मिस्टेक वहाँ पर आया. सो 42 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एग्जाम्पल बचे. 9 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज 9 एग्जाम्पल अभी नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है. 42 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके. So this is the sufficient study for this particular video lecture. So for more MCQs, stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So today I am going to stop here. On next day we'll start the MCQ number 42 to MCQ number 50. 42 to 50 से भी 9 एग्जाम हमें करना है. We'll see on the next day. Okay, so thank you very much.